Settle down, please. So, we have seen the reason for color. Loosely held electrons, atoms, lone pairs, whatever. Let's look at case 1. Alkali metals. Add color to flame. There are two things here, adding and flame. Why do we use the word add? Because flame has some characteristic color. What do you mean by characteristic? When we don't know something, we say characteristic. They add their own color. Like sodium adds golden yellow, potassium, I don't know. Okay, now, where is the need for any flame? If light falls on a piece of sodium, what happens? Does that reach the electrons? No, because piece of sodium doesn't have electrons. Who has electrons? Sodium atom has electrons. Sodium atom, but here we don't have sodium atom, a piece of sodium bulk. Therefore, when light falls on a piece of sodium, light gets reflected, that's all. Now, so when you put the sodium into a flame, it atomizes. Now sodium atoms are exposed to light. Sodium in atomic state. Therefore, the light reaches the electrons. Suppose if I ask the whole class, what do you like? Who is that I am asking? No one in particular. So I have to single out a person before I ask a question. What are your likes and dislikes? Singling out. So what is the role of flame? Atomization. So, why do they give color? Alkali metals, their general electronic configuration is NS1, unpaired electron. So, excites, easily is the word. Excites easily. Easily means, difficulty means UV light. Easily means visible light. By taking visible light, by using visible light. Therefore, you get that color. Whatever color they use in excitation, they give back during de-excitation. जो लिया वही वापस करते. Second point, beryllium and magnesium do not give color to flame. Why? Yes. They have paired electrons, but calcium, strontium, barium give color. What is the difference? Paired electrons close to the nucleus, loosely held. 2s2 and 3s2 respectively. Paired electrons close to the nucleus. So what? Don't they get excited? What did I say yesterday? All electrons in all substances get excited. Did you come yesterday? All electrons in all substances always get excited. The question is, at what cost? They absorb UV. UV लेके ऊपर जाएंगे, वापस वे UV देते. Now, what about calcium, strontium, barium? Big size.
Second point. Third point is the most important 2016 mains. Elements, mainly metals, and their compounds give same color to flame. There are two surprising things here. What is that? Compounds giving the color and compounds giving the same color as well. Same color. Why is it surprising? Sodium, okay. 3s1, unpaired electron. But NaCl also gives the same color, whereas Na plus doesn't have that unpaired electron. Na plus is neon, Cl minus is argon. Wherever is that 3s1, it has become 3p6 now. 3p6 of chlorine. So, why are they giving color? Any idea? Sorry? How does it atomize? He is saying something good. Strong heating atomization takes place. But I told you, सोडियम क्लोराइड को जितना भी तो हीट करो, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड सॉलिड लेयर. You get Na plus in gaseous state and Cl minus in gaseous state. और आगे जितना भी हीट करेगा, ना Cl माइनस इलेक्ट्रॉन वापस देगा, ना सोडियम इतना बेशर्म है कि इलेक्ट्रॉन वापस लेगा. मैंने कल एक चॉकलेट दिया, आ जाके वापस पूछूंगा थोड़ी. कौन करता है वो काम? छोटे बच्चे. छोटे बच्चों में होता है स्मॉल कैटायंस. एंड व्हाट इज दैट कॉल्ड? कोवेलेंसी. देना लेना देना लेना, है ना? देयरफॉर दिस इज हाईली आयनिक. यहां से यहां का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर नहीं होता. दैट इज व्हाई सोडियम क्लोराइड इज सेड टू बी, एनीबॉडी, thermally stable. What do you mean by thermal stability? Retaining its identity. I am a very stable person. Many people tried to change me, threatened, went to the extent said, तुमको बेरोजगार बना देंगे. I never changed. What is their contention? आप inorganic पढ़ाते हो, बीच में physical organic क्यों उठाते हो? What is the reason I go to that parts? Inorganic teaches you only the theory, basis of chemistry, and applications are seen only in the other parts of chemistry. अभी देखो, now I have to talk about crystal defects here. देखो, so thermally stable ये होगा नहीं, but you have a good point there. Sodium gives electron, chlorine takes. Sodium gives, chlorine takes. Sodium gives, no one takes, no takers. क्या हो गया इस इलेक्ट्रॉन को? लावारिस बन गया. It has fallen into the crystal lattice. So what is this called? This is a crystal defect called F-center defect. F-center defect. F for favor. Favor means color in German. है ना? Therefore, due to that F-center defect, which can be created artificially also, it is also called metal ज्यादा है ना, यहाँ क्लोरीन कम है ना, metal excess defect. Metal excess defect. जिनकी वजह से डेंसिटी
मास कम है, वॉल्यूम उतना ही है, कम हो जाएगा. Secondly, to what he said, Bunsen burner, this is what is given in 2016, but they created some trouble with the question. I tell you what that is. We have a pipe here, and here it is a CU. CU means a passage to control the supply of oxygen. You can increase or decrease at will. CU. यहाँ दो पार्ट रहेंगे. The part which is closer is colder part. Colder part. Are the letters visible at the last bench? इससे बड़ा लिख नहीं पा रहा, नाश्ता नहीं किया. Closer, colder, less kinetic energy. Particles have less kinetic energy. That's why they are unable to go above. For a particle to go above, it needs to have kinetic energy. And this is due to incomplete combustion. This is there only in the dictionary of chemistry, the entire detail. Did someone get that handbook? This is the one I strongly recommend. How many of you have this? Only 2, 3. नाम लिखो, या तो पूरा क्लास में हो जाता है ना. Incomplete combustion. And you will find carbon particles also. उधर carbon particles उड़ते रहेंगे, therefore blue in color. I think in your lower classes you studied the contrary. That was about a candle flame, not a Bunsen flame. Here hydrocarbon is the fuel. What is the fuel? Hydrocarbon is the fuel. Mostly it is. Nowadays you are using LPG cylinders in your schools for creating the flame, but in our days we used to have a gobar gas plant. Methane, essentially methane, gobar gas. So methane when completely burns, complete combustion, you get CO2 and H2O. But in incomplete combustion, carbon remains like that, hydrogen becomes H2O, say, incomplete combustion. And this is called a reducing part of the flame. Reducing part, and compounds are tested here. What about this region? What about the tip? They have created 4 regions. One is the tip. Tip is the coldest part. Why? All kinetic energy is consumed. Therefore, they are unable to go any further. Coldest part. The second region is the hotter part. They have created 4 regions. Tip, here, here, here. Now, wherever you have that concave shape, that is the hottest part. Concave, wide. Now, this is hottest part of the flame. यहाँ blue color नहीं रहता है. And more kinetic energy. And this is called oxidizing part of the flame. And elements are tested here. Element को इधर रखना है, compound को इधर रखना है. Even after teaching chemistry for 20 years, I was foolish enough to try a piece of chalk in a candle flame. Candle flame में रख के देख रहा था. Candle flame में क्या है? You have full supply of oxygen and there are no carbon particles. Ulta, that calcium carbonate, the piece of chalk, first that should
एटमाइज एज ही सेज, एटमाइज होना है, वो फ्लेम काफी नहीं. नाउ in fact that is converted to a paste and taken on a platinum gauze. Of course nowadays you are given iron gauzes, no platinum in laboratories. Chemists are very rich, they talk about everything. They even tell you take a 12-gram diamond and burn it to teach you combustion. Mass of carbon dioxide produced when 12-gram diamond is burned. Which fool will do that? I will write 0. Instead of teaching chemistry, I would rather take that away and go. Now, right, सुनिए भाई, सोडियम सॉलिड लिया मैंने यहाँ, ऑक्सीडाइजिंग पार्ट में हीट कर रहा हूं, Na प्लस बन जाएंगे, 99.999% बन जाएंगे. यहां ऑक्सीडेशन जरूरी नहीं है, फिर भी हो जाता है. मैं क्या करूं? इज ऑक्सीडेशन रिक्वायर्ड हियर? उल्टा, वी नीड एटमाइजेशन. आई वांट सोडियम एटम्स, but because of the high heat of the flame, ionization also takes place, which is not required, unwanted, undesirable, and very few will remain in sodium atom state, sodium gas, 0.001%. See, my math is right. So, even if one atom is there, that is enough to tell me. If I want to know what Punjabi is like, I don't need to ask the whole of Punjab. It is enough if I find one Punjabi. क्या पसंद है? तंदूरी, बस. Now, therefore, this electron excites easily, and you get that color, required color. Have you all understood? Why is it called oxidizing part? यहाँ oxidation हो जाता है. Is oxidation required for us? No. You are new to this class, huh? Coming regularly. कहाँ बैठ रहा था? Lost in the crowd. Shall I? Next. What about this? Sodium chloride is thermally stable. Heat karo. Mercuric sulfide, also called cinnabar. So, these physical states are very important, I am telling you. Because to observe the changes at a micro level, you should know the physical state also. Cinnabar, heat karo. Mercuric ion बनेंगे, सल्फाइड आयन बनेंगे. ठीक है ना? अभी ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं, अपने आप सल्फर इलेक्ट्रॉन दे देगा, mercury खुशी होकर ले लेगा. फॉर एग्जाम्पल यू सी, प्लीज होल्ड दिस. Why have I given that to him? To make my hands free. Okay. Now, ऐसा चिल्लाने की जरूरत है क्या? चिल्लाने की जरूरत नहीं. सर क्यों चिल्लाते हो? पकड़ो. सिर्फ ऐसा हाथ दिखाए तो दे देगा. Just if I put my hand, I will get it. It is so automatic, natural. What is this called? डर गए? Yes. What is this called? What is this called? Metallurgy, thermal reduction. What is this called? Where will it take place? Wherever the electronic transfer is automatic, highly covalent. कोवेलेंट सब्सटेंस में हो जाता है ना. सल्फर को इलेक्ट्रॉन जरूरी है, ठीक है ना,
and you will see occasions where even silver fluoride, when you heat that with CH3Cl, silver fluoride, Schwarz reaction. Are you getting my point now? Why I am talking about Schwarz reaction? This is another example for thermal reduction. यहाँ silver रोते रोते electron देगा. Unwillingly, silver is a noble metal. It doesn't want to be in positive state. Zero में पसंद करने वाले तीन लोग हैं दुनिया में. Gold, silver, and to some extent copper. That's why self-reduction takes place in them. Now, अभी क्लोरीन क्या बोलेगा? बेवकूफ, तुम्हारा इलेक्ट्रॉन वापस ले रहा. Halogen exchange. F minus prefers to take electrons from carbon rather than silver. तुमसे कार्बन अच्छा है. खिलाते खिलाते टाइम तुमको खिलाना पड़ा, मेरा बदनसीब है. ऐसा बोला तो कोई, ऐसा घर में कोई खाता है क्या? बूफे में बुलाया, खा खाओ खाओ, मस्त खाओ मस्त खाओ, मुझे बर्बाद करने है ना, खाओ. सो सोडियम क्लोराइड हीट किया तो क्या होता है भाई? सोडियम आयन्स इन गैसियस स्टेट. व्हाट इज दिस कॉल्ड? सॉरी, व्हाट इज दिस चेंज कॉल्ड? Physical change, change of state from solid state to gaseous state. That's all. Nothing will happen. So when heated further, है ना, Cl minus से electron transfer आसान नहीं है. No action. But due to the presence of carbon particles, सोडियम ने क्लोरीन को एक किताब दे दिया परमानेंटली. सोडियम क्लोरीन को दे दिया, ले लो करके. लेकिन जब इनको जरूरी है, वापस पूछने में थोड़ा शर्म है, तो फिर क्या करेगा? बीच में कार्बन को बोल देगा, अरे यार कार्बन, थोड़ा इलेक्ट्रॉन लेके दे दे, है ना, उनसे ले लो, मुझे दे. दिस टेक्स प्लेस वेरी स्मॉल अमाउंट्स. Sodium atom in sodium gas in very small amounts. ऐसा पूरा मेटलर्जिकल रिडक्शन नहीं होता है भाई. मेटलर्जिकल रिडक्शन एक्सट्रैक्शन मेटल के लिए तरीका नहीं है, तो माइन्यूट क्वांटिटी में होता है. बट हमको उतना काफी है. क्या बोल रहा था? सल्फर, दोनों. सल्फर को इतना इलेक्ट्रॉन की जरूरी नहीं है. सल्फर प्रेफर्स टू बी इन एटॉमिक स्टेट एंड मर्क्यूरी ऑल्सो प्रेफर्स टू बी इन एटॉमिक स्टेट. ठीक है ना? ही इज आस्किंग, सल्फर इतना आसानी से दे देता है क्या? यस, सल्फर आयोडीन, they have more tendency to be in their uncombined state. नॉन मेटल्स में भी कुछ नोबल है. समझ में आया? क्या करने के लिए कोशिश कर रहा था? बढ़ाने के लिए. कोई फायदा नहीं. समर में क्या कमाएगा? नाउ थोड़ा बड़ा लेटर्स लिख सकता है ना? फ्यूचर जनरेशन किसी को काम आएगा ना. तुम्हारा छोटा भाई कोई होगा. Now, here onwards we can run through the entire list.
Bunsen is my favorite topic. Now, how many of you got that right? 2016 mains में Bunsen. हाँ नेगेटिव गया मेरे पढ़ाने की वजह से. मेरा क्लास में था तू? तो आंसर नहीं किया, अटेम्प्ट नहीं किया. सेफ. 4 रीजन दिया ना, दैट इज स्लाइटली मिसलीडिंग. बहुत लोग रीजन 2 बताया, बहुत लोग रीजन 3 बताया, 2, 3 की बीच में अभी भी चक्कर चल रहा है. नाउ सोडियम इन लिकर अमोनिया. Blue in color. Which color? Not necessary though. Conductor of electricity. 2014 advanced. Paramagnetic. Powerful reducing agent. Now, कल मैंने बोला सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन दे देगा, हाइड्रोजन उड़ जाएगा, हीट भी आएगा, बर्न होगा, डैम्प फायर. दैट इज कॉल्ड डैम्प फायर. वाटर विच इज सपोज टू पुट डाउन फायर क्रिएट्स फायर. वाटर की वजह से फायर आया. एनी हाउ, पानी में डाला तो H+ को इलेक्ट्रॉन मिलेगा. सोडियम को लिक्विड अमोनिया, अमोनिया में डाला तो सोडियम का आदत क्या है मेटल्स का? दे थ्रो इलेक्ट्रॉन्स वेदर अदर्स, दे गिव कैचेस वेदर अदर्स टेक द कैच और नॉट. यहां अमोनिया है, NH3, NH3, NH3. Sodium gives electron, no one takes. Sodium gives, no one takes, and the electrons become Lavaris electrons. घूमते रहेंगे. That's why it is a conductor of electricity. Unpaired electrons अकेला पड़ा है ना, therefore that is paramagnetic. And you get electrons like a fish from an aquarium. हाथ रखो इलेक्ट्रॉन मिलेगा. Powerful reducing agent. Loosely held electrons है ना, they get excited. Excited easily. Loosely held electrons. And these electrons are called solvated electrons. What do you mean by solvated electrons? Electrons surrounded by a solvent. Wait here. सोडियम इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, हु विल गवर्न दिस इलेक्ट्रॉन्स? लावारिस बच्चा को देखभाल कौन करता है? हाँ, कैसे? ठीक है ना? सो सपोज चाइल्ड इज रोमिंग इन ए विलेज, द विलेजेस टेक केयर ऑफ हिम, नॉट दैट दे डोंट गिव हिम परमानेंट शेल्टर. कभी कोई इडली खिलाएगा, कभी कोई वड़ा पाव खिलाएगा, है ना? NH3, the positive charge on hydrogen, partial, takes care of it, and the negative charge takes care of this. So, effectively, sodium solid in ammonia liquid, you get NaNH3 X times plus. ऐसे एक अमोनिया नहीं, बहुत सारे अमोनिया करेंगे. इट्स नॉट जस्ट वन अमोनिया. दिस इज कॉल्ड अमोनिएटेड सोडियम आयन. प्लस ENH3
Y times minus. This is called ammoniated electron, solvated electron. If water does this, what is it called? Hydrated. NaH2O X times plus. What is it called? NaH2O. Hydrated sodium ion. Hydrated. Hydrated, solvated, ammoniated. And it is a powerful reducing agent, and it makes you believe anything is possible. It performs even impossible reactions also. For example, this nonsense mirchi reduction, sodium in liquid ammonia, क्या होएगा? Aromatic becomes anti-aromatic. Is it a natural reaction? Why has it taken place? Because of the strength of the reducing agent. Because of this takes place because of the power. Reagent. It's not a natural one. इसका मैकेनिज्म बताना बेवकूफी है. इसीलिए आईआईटी ने क्या किया? बेंजाइन मैकेनिज्म एक्सक्लूडेड. देखा सिलेबस में? बेंजाइन नहीं है, लेकिन तुम लोग वही ज्यादा करते हैं. Sin substitution benzene mechanism excluded because इसका क्या मैकेनिज्म होता है? सुनामी आया, बिल्डिंग गिर गया, मैकेनिज्म बता बोले तो दैट इज एन एक्सीडेंट. एक्सीडेंट का क्या मैकेनिज्म रहता है? नाउ आई हेट दैट बिर्च रिडक्शन एंड आई स्टॉप हियर ना, एंड रेजोनेंस स्टार्ट्स हियर. अपना हंगामा यहां चालू करती है. ये नहीं पढ़ा अभी देख. So, suppose there are 100 people, there is one person here. I have to shoot him. How can I ensure that my bullet hits him? How can you ensure that a bullet reaches the target? नहीं, जहां बुलेट गिरेगा वहां बुलसई बनाओ. बुलेट यहाँ लग गया, then you come and paint that red. Now, so how can you ensure that person, my bullet will hit that person? Fire 1000 bullets. 1000 bullets एक साथ में फायर किया तो एक न एक लगेगा ना. या तो एक ही बुलेट रहा तो यहाँ 1000 लोगों को खड़ा कर दो. बहुत लोगों को खड़ा किया तो ये जाके किसी न किसी को लगेगा. सिमिलरली सोडियम, देखो अमोनिया में H+ क्यों नहीं है भाई? H2O अंडरगोस, क्या बोलते हैं इसको? सेल्फ आयनाइजेशन. H+ H2O सॉरी OH माइनस है. H+ OH- are there with a self ionization constant of sick बोलते, sick self ionization constant of water, ionic product of water 10⁻⁻14. Ammonia also undergoes self ionization, but its K-sick ammonia बहुत कम है. K-sick ammonia self ionization constant 10⁻⁻21. Ions नहीं है भाई, but you know that any K is directly proportional to temperature. Any equilibrium constant, any for that matter, K is proportional to temperature. Therefore, if you take sodium, solid, liquid ammonia, and I think iron as catalyst and 250 degrees heat किया तो definitely ionization increases and you get sodium sodamide form होगा.
I think this is given in NCERT. इतना दिया है. Next. On long standing means थोड़ी देर के बाद the solution becomes, which solution? Sodium and liquor ammonia solution becomes bronze. Change in color. क्यों हुआ होगा? Solution becomes diamagnetic. कैसे? The electrons, they combine to give E2 minus. Electride ions. Electride. Like nitride, phosphide. How are they formed? There is no surprise in there. How can two electrons combine? Both being negatively charged. Sorry? On long standing, what happens is they change their spin to combine. Spin बदल डाल के रेपल करते हैं, एक दूसरे से रेपल हुआ ना, रेपल हुआ तो अभी दो इलेक्ट्रॉन ऐसा है. When they repel each other, they change their spin and combine to form electride ions, metal electrides. है ना? ये नहीं है एनसीईआरटी में. डाया बनता है वहां तक है. सॉरी सेल्फ आयनाइजेशन अमोनिया में H प्लस ऐसा ही लिखा, OH में लिखा तुम भी, NH2 माइनस. थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है. सोडामाइड, a strong base. पूरा है ना नोट्स में? Ammoniated solvated electrons. Metal electrides, Na2E2. Case 4. Now it's case 5. यस. किसका कंसंट्रेशन? यस, अमोनिया का कंसंट्रेशन ज्यादा होना है और हीट भी करना है. देखो एनसीईआरटी है ना, सामने है ना. अल्कली मेटल्स, एस ब्लॉक नहीं उधर ही. कॉन्सेंट्रेटेड हीट तो जरूरी है. सेल्फ आयनाइजेशन कांस्टेंट बढ़ाना है ना. सिक लिक्विड का कॉन्सेंट्रेशन से K नहीं बदलता है ना. K डजंट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन. टेम्परेचर 250 डिग्रीज, आयरन कैटलिस्ट ऑल्सो. नाउ कोई बात नहीं. NO2 is colored. You know why now? Of course paramagnetic. Single unpaired electron है ना, excites easily. Single unpaired electron excites. Never use the word excite because all electrons in all substances always get excited. Keep that back of your mind. सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कर सकता हूं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन को भी एक्साइट कर सकता हूं. ये एक्सरेस देखिए, एक्साइट्स इजीली, therefore colored, reddish brown color. K6. So until now what is it we have looked at? Alkali metals, alkaline earth metals, sodium and liquor ammonia. Means S ब्लॉक का कलर्स हो गया. P ब्लॉक में NO2 ही कलर है, ज्यादा कलर नहीं है. P ब्लॉक में बहुत ज्यादा नहीं है. हैलोजेंस के लिए कलर है F2Cl2Br2I2.
P block का color. Now we are going to the color of D block. Transition metal compounds. With unpaired electrons. What is it we have to explain in this chapter? Very surprisingly. क्या एक्सप्लेन करना है? ज्यादा एनर्जी दिया तो क्या होता है, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं. कोई आदमी भगवान के लिए 25 साल प्रार्थना किया. जब भगवान प्रसन्न हो गया, बेटा क्या चाहिए मांगो करके बोला, तो भगवान मुझे 2 रुपये दे दो करके मुझे, तो भगवान भी डर जाएगा. इतना कम पैसे लेके क्या करोगे? विजिबल लाइट क्या करेगी रे तू? आखिर घर से निकलते टाइम मम्मी मुझे 50 रुपये दे दो करके बोले तो कोई भी मम्मी दे देगा. मम्मी मुझे 25 पैसे दे दो बोले तो 25 पैसे लेके क्या करेगा? द डाउट arises. So we have to explain small amounts of energy, who is using them. इंफ्रारेड लेके क्या होता है? फिजिक्स में पढ़ा होगा. इंफ्रारेड, sorry, when substances absorb infrared radiations, linear substance है तो ट्रांसलेटरी मोशन होगा. HCl ऐसा ऐसा ऐसा. H2O, ऑक्सीजन यहां, 2 हाइड्रोजन यहां है ना, एक हाइड्रोजन पास में आएगा, दूसरा हाइड्रोजन दूर जाएगा. दे मेक वाइब्रेशनल डांस एंड रोटेशन. मॉलिक्यूल पूरा का पूरा घूम जाएगा. ऐसा मॉलिक्यूल होगा ना, दैट विल टर्न. सो they are used in the vibrational, rotational, translational motions which are converted into internal energy. That is why substances get their temperature. Infrared radiation is nothing but heat, na? Heat absorb करने के बाद how is it converted to temperature? वो एनर्जी उनके पास ही रहेगा, घूमते रहेगा ना, वाइब्रेशन. एनर्जी लिया, वाइब्रेट किया, वापसी में आया, आ गया. So that is there with them. Now, transition metal compounds with unpaired electrons in presence of a ligand. What is a ligand? मैंने बताया, electron pair donor, Lewis base. Electron pair donor, Lewis base. Transition metal compounds with unpaired electron presence of a ligand are colored. The color is due to DD transition. Copper sulfate, anhydrous. Anhydrous means वो 5H2O नहीं है. डॉट 5H2O रहता है ना, डॉट डॉट, वो नहीं है. Is colorless. इसकी चेहरे पे थोड़ा पानी डाल दो, ब्लू बन जाएगा. Hydrated copper sulfate. What is that? CuSO4 5H2O. Blue vitriol. And aqueous copper sulfate solution. All these are blue in color. Blue in color. Aqueous CrCl3 solution, I believe that is green in color. Green with a question mark, I am not sure. Chromium 3 is always green. Green. So
chromium chloride solution. Why is that colored? Chromium 3d5 4s1, chromium 3, यहां से एक, यहां से दो. फर्स्ट एस से निकालना है, याद रखना. लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पहले निकालना है. Cr3 plus is 3d3. नाउ एक छोटा बच्चा मेरे साथ सफर कर रहा था सुपरफास्ट गाड़ी में. इनका पिता ने इनकी पैसा मुझे दे दिया क्योंकि छोटा बच्चा है ना. हम जा रहे थे. वो बच्चा एक बार आके सर मुझे 5 रुपया दे दो करके पूछा. मैं हैरान हो गया. अगर वो बोलता सर मुझे एसी में जाना है 500 रुपया दे दो, दे देता. 3 टायर में जाना है, 2 टायर में जाना है, लेकिन उन्होंने 5 रुपये मांगा. मैंने पूछा बेवकूफ 5 रुपये लेके क्या करेगा? सर यही कंपार्टमेंट में उधर विंडो सीट है ना, उधर जाके बैठूंगा. अरे बेवकूफ, मुझे बेवकूफ बना रहे क्या? इसी सेम कंपार्टमेंट में एक जगह से दूसरा जगह जाने के लिए पैसे क्यों लगते हैं रे? क्यों बोले वैसे नहीं लगता है सर, लेकिन ये जो टीटी है ना वो बोल रहे कि आगे स्टेशन में कोई आएगा, इनको 5 रुपये दिया तो मान लेगा. ठीक है, ओके. देखो, सो आई आस्क्ड क्रोमियम व्हाई डू यू वांट ग्रीन कलर? नहीं सर ये बच्चे है ना, दे वांट टू गो फ्रॉम 1d to another d. व्हाट इज इज कॉल्ड? dd transition. Look at the Americanization. That's why I don't like those fellows. What is excitation of electron? एक्साइटेशन का मतलब क्या है? एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉन जाना. dd ट्रांजिशन मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, और क्या है? नाउ सो dd ट्रांजिशन. अब क्या होगा? सो एक डी से दूसरा डी जाने के लिए मुझे क्या डाउट आया? अरे all 5d orbitals have all 5d orbitals have same energy. They are called, they are degenerate orbitals. They are degenerate. So to go from one d to another d, energy is not required, however small it is. लेकिन in presence of a ligand, ligand क्या करेगा? That splits these 5d orbitals into groups. But in presence of a ligand, they split into groups. What did I not say? They split into 2 groups करके नहीं बोला. Because in our syllabus we have excluding the details of electronic transition. Electronic transition का details नहीं है. Crystal field stabilization energies नहीं है हमारा syllabus में, IIT के syllabus में. NCERT में है. These two are called something T2G, EG, something nonsense, I don't know. So, ligand, कौन है ligand? देखो, what is that I am trying to show you? Not a tiger spa. What is this? All 5d orbitals equidistant from the nucleus. 5d orbitals equidistant from the nucleus. When a ligand comes, what is the ligand? Electron pair donor. He is getting me a pair of electrons. Pair of electrons साथ में ले आ रहे. When these two approach, there will be repulsion and ऐसा हो जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा. Means they become unequidistant.
They are no more equidistant, no longer. Therefore, there is a gap in the energy levels and you require energy. लेकिन not huge amounts of energy, one sentence नहीं, थोड़ा visible काफी है, visible energy काफी है. Now, 5d orbitals ऐसा क्यों हो गया? All 5d orbitals don't have the same orientation, means direction, है ना? dxy वगैरह, they are intersecting the axis, dxy, dxy. What about dx square minus y square? Its orientation is on the axis, dx square minus y square. dz square on the z axis, on the z axis with a collar. So, यहाँ एक चौराहे पर लोग दंगे कर रहे हैं, एजिटेशन, यहाँ गली में, गली का अंदर भी. जब पुलिस आएंगे किसको पहले वाट लगेगी? हाँ? Those who are on the main roads, axis में, internuclear axis में जो है ना, they are more affected. So they go away. ये लोग भाग जाएंगे, जो गले में हड़ताल कर रहे हैं ना, भाग चले जाएंगे. So all 5d orbitals do not have the same orientation. Now, have you understood dd transition? Now, याद रखना, unpaired electron vacant orbital जाएगा, paired electron दूसरा unpaired electron के साथ pair up होने जाएगा. अगर यह pair of electrons है, समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन इधर 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 जाने के लिए मन करेगा. But what about pairing going into a jail? कैद होना. No one volunteers to go to a jail. A free bird will never want to be tied down. हथकड़ी लगवाने के लिए कोई सामने से नहीं आएगा, आ जाओ सर प्लीज अरेस्ट में, ठीक है ना. लेकिन D5 जो है ना, D5, what is D5? 5 unpaired electrons, manganese 2 plus, 5 unpaired electrons एक दूसरे के साथ पेयर होने के लिए नहीं मानेगा. So D5 is spin forbidden, colorless, unpaired electron है. So copper sulfate solution में क्या हो रहा है? Water is acting as ligand. H2 itself is a ligand है ना, aqua complex. I have to remind you something. CuSO4 5H2 है ना, ये water of hydration क्या रहते हैं मालूम? 1 for anion. One of the water molecules for 1 for anion, rest for cation. एक एनियन के साथ रहेगा, बाकी कैटायन के साथ रहेंगे. कैसे देखो, CuH2O 4 times plus 2 plus I suppose, डेटिव वन फॉर्म करेंगे, एक्वा कॉम्प्लेक्स. ये एनियन के साथ वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा? एनियन के साथ जो है ना, क्या करेगा? H plus delta, hydrogen bond. 1 for anion, rest for cation. Generally, alkali metals and copper take only 4 water molecules, water of hydration. General. K2SO4
Al2SO4 thrice, (24H2O). ये 24H2O क्या कर रहे हो के 4 एनायन है, 4 सल्फेट है, 4 सल्फेट के लिए 4 वाटर मॉलिक्यूल, Al3+, इनके लिए 6, इनके 6, K+, इनके लिए 4, 4। ऐसा क्यों? स्मॉल आयन्स आर मोर हाइड्रेटेड। पोटेशियम से एल्यूमिनियम बहुत छोटा है ना, एल्यूमिनियम गेट्स मोर हाइड्रेशन। अल्कली मेटल्स के लिए 4 काफी है, वैसे एक भी जरूरी नहीं है, लेकिन वाटर आके सिर के ऊपर बैठ गया तो क्या करेंगे? आई डोंट वांट एनी गेस्ट एट होम, लेकिन लोग सूटकेस पकड़ के आए तो मैं क्या करता हूं? 1 for anion, rest for cation. Okay, small ions are more hydrated. The moment I teach you hydration, you can say you have learnt a lot of chemistry. Hydration पढ़ाना है, लेकिन वो S block, D block में पढ़ाता हूँ। मेरा S block, D block, surface chemistry, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चारों एक ही है, कॉमन एरियाज, थोड़ा बहुत मेटलर्जी भी साथ में है। नाउ केस नंबर 6 हो गया ना। 7, इफ अंडरलाइन transition metal compounds even without unpaired electrons, unpaired electrons नहीं है, even in the absence of a ligand, even in solid state। इसका मतलब क्या है? That is not even water to act as a ligand, पानी तक भी नहीं है लिगैंड का काम करने के लिए, एक्वा कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। सॉलिड स्टेट है ना, solid state or colored, the color is due to charge transfer। What do you mean by charge transfer? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह, सबको अलग अलग नाम दे रखा है, सब सेम है। Extended conjugation. What is extended conjugation? Conjugation means इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरा जगह जाना। पोलराइजेशन कल बताया ना, व्हाट इज पोलराइजेशन? नाइबर की रसोई से खाना हमारा घर में आना, उनका खाना हमारा पेट में। पोलराइजेशन। चार्ज एक, इन ऑल दीज केसेस ऑल आर चार्ज ट्रांसफर ओनली, all of them are charge transfer only। Excitation, DD transition, charge transfer, polarization, extended conjugation, 10-10 नाम दे रखा है अमेरिकन गधों ने। Cheating। Now what is charge transfer? Let us see। KMnO4 solid state, पर्पल कलर है ना। पोटेशियम डाइक्रोमेट even in solid state, orange, red, ऑरेंज हो रेड हो मुझे नहीं मालूम, ऑरेंज रेड। नाउ
Why are they colored? MnO4 minus देखो Mn double bond O, double bond O, double bond O, O minus. Manganese is in +7 state. मालूम है तुमको? Argon 3d0 4s0. हाँ, this is 3d0. So ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो यहां से यहां आता जाता रहेगा. दिस इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर. यहां से यहां आता जाता रहेगा. बाय टेकिंग विजिबल लाइट. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? इलेक्ट्रॉन आए नहीं आए मेरा कोई बात नहीं. विजिबल लाइट लिया कि नहीं? विजिबल लाइट लेके इधर से इधर आते जाते रहेंगे. जब ये इधर आएगा ऑफकोर्स ये ऐसा आ जाएगा, +7 to +6 बनेगा. +7 से लेके +6 बनेगा. ऐसा इधर आया, इधर ऐसा. नाउ सो दिस इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर. 2015 में ये मेंस में एक क्वेश्चन था, बच्चे कंफ्यूज हो गए. L to M चार्ज ट्रांसफर, M to L ऐसा दिया. बच्चों ने क्या गिना? KLMN ऐसा गिन करके M to L. सॉरी यार, KLM है ना, M to L आया तो L to M जाए तो L to M गया तो एनर्जी ऑब्जर्व होगा. वो नहीं, M to L लिखा है. लेकिन वो क्या था? लिगैंड मेटल है ना, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर. एंड अमेरिकन गदोन ने परमांगनेट को बोलता है एक कॉम्प्लेक्स करके बोलता है. फॉर मी इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड. थरोली दे कॉल इट टेट्राऑक्सो मैंगनेट 7. डंकीज एक तो नहीं. I don't consider that as a complex. No dative bonds whatsoever. अब Mn7 plus रहा तो ये मुमकिन है. Mn7 plus है ही नहीं. The charge is imaginary. बताया ना मैंने. Oxidation state. What is oxidation state? Charge. Sometimes real, sometimes imaginary. That is imaginary charge. Okay. कल क्या हो गया तुम? तभी ठीक. एक क्लास से तबीयत खराब हो. नाउ L to M चार्ज ट्रांसफर. टेट्राऑक्सो मैंगनेट 7. नॉट ओनली दैट, अजीब सा चीज भी, D3S हाइब्रिडाइजेशन. हाँ, D3S. D में 5 का 5 खाली है, सिर्फ ये 3 लेंगे और OSO ले लेगा. पागल है क्या? ठीक है ना? सुदर्शन गुहा में भी दिया होगा ना, पढ़ा? किसी को गिफ्ट दे दिया कि नहीं? गुहा. नाउ या तो सेकंड हैंड मार्केट में भेज दो. भेज करके कुछ आइनॉक्स में मूवी के लिए जाओ. मुझे भी लेके जाओ. Now, case 8. AgBr is colored. Heading में बाद में बताऊंगा. Pale yellow. AgI is yellow. Oh my God, we are doing very, very, very fast. By lunch time, color will be. Lunch time क्या है? अभी हो गया. आधा घंटा में हो जाता हूँ मैक्सिमम. कलर हो गया तो रिएक्टिविटी. 3 दिन में पी ब्लॉक खत्म हुआ तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक 1 दिन, मेटलर्जी 1 दिन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स 1 दिन, और वो क्या है क्वालिटेटिव एनालिसिस आधा दिन.
आधा भी नहीं, 2-3 घंटे. हाँ, हाइड्रोजन के लिए पूरा 1 दिन लगता है. सॉरी, दिवाली इधर ही मनाएंगे ना. पिछले साल मैंने पूछा बच्चों से, दिवाली में अगर क्लास नहीं है तो क्या करेंगे? ऑल ऑफ देम सेड अनइक्विवोकली, सर 12 बजे तक सोएंगे. देखो, दे आर स्टार्विंग फॉर स्लीप. Why are they colored? AgBr is photosensitive. Photosensitive. What does it mean? लाइट लगा तो Ag plus Br हो जाता है. What does all these things tell you? Silver never wants to be in silver plus state. सिल्वर के लिए 0 ही पसंद है. यह ब्रोमीन भी, अच्छा तुमको तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चाहिए क्या, ले दे देता है. यह Ag प्लस Br माइनस है ना, यहां से यह इलेक्ट्रॉन पोलराइज हो जाता है. पोलराइजेशन by taking visible energy. So polarization. कहां से कहां? What is charge transfer? एनायन का अंदर, यह एनायन टू कैटायन. फर्क देखो, वह O माइनस से लेके मैंगनीज, विद इन द सेम मॉलिक्यूल चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम एनायन टू कैटायन चार्ज, है ना. देखो, चार्ज ट्रांसफर विद इन द आयन. हियर चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम anion to cation. This is called polarization. L1, L2, L3, L4 are 4 ligands forming ML1, ML2, ML3, something like that. L1 is blue in color. This is red in color. This is green. This is yellow. Which is strongest ligand? Stronger. Strength of the ligand. Ligand strength का increasing, decreasing order. देखो, violet, indigo, blue, green, yellow, ऑरेंज, रेड, है ना. लेफ्ट टू राइट क्या होता है? एनर्जी डिक्रीजेस. सो ब्लू कौन है? L1. L2 रेड, L3, L4. So here smallest amount of energy is required. Red एनर्जी कम है ना. So this is the weakest ligand, this is the strongest ligand. Violet किसके लिए लगेगा? Violet strongest ligand के लिए लगेगा. ये 2014 का क्वेश्चन है and a question from previous Olympiad, and that's a very, very good question. Depending on the color and depending on the energy, we can find out how the what is that called? Splitting का कितना हुआ? Extent of splitting is decided by the energy absorbed. 9 है ना? 10 halogens, 11 NO halogen oxides, extended conjugate. Para hydroxyazobenzene. Benzene is colorless. Benzene is colorless. This is called azo group. This is called azobenzene.
Even azobenzene is also not colored. Benzene is not colored, azobenzene is not colored. अगर बेंजीन कुछ येलो दिख रहा तो that is due to impurities. And हमारा लैबोरेटरी में ज्यादा रहता भी है. Now, para-hydroxy azobenzene is colored. What color I don't know. I think it is yellow. यहाँ ये है ना, this will trigger the conjugation. ये इधर आएगा, 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 ये इधर जाएगा, दोबारा ये इधर आया तो इधर बाण है ना, ये इधर आएगा, ऐसा इधर बाण है. ठीक है ना? This is called extended conjugation. यहां कितने परिमाण है? कितने परिमाण है? 9. 3 + 1 4 + 3 7. 3 है ना, बेंजीन में 3 है. 7 एंड लोन पेयर 8. लोन पेयर देखो देखो, पाई बॉन्ड, लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, तीनों में कोई फर्क नहीं. पाई बॉन्ड बोलो, लोन पेयर बोलो, या तो नेगेटिव चार्ज बोलो. तुम्हारा बोर्ड की किताब में 11वीं की बहुत अच्छा दिया है. ठीक है ना? क्या बोला? पाई बॉन्ड कभी नेगेटिव बनेगा, पाई बॉन्ड बिकम्स नेगेटिव, नेगेटिव बिकम्स पाई बॉन्ड, ऐसा. नेक्स्ट, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन. माय ऑब्जर्वेशन, मिनिमम 8 लोन पेयर्स रहना है कॉन्जुगेशन में, मिनिमम. सो द पाई बॉन्ड्स मूव easily, but it also requires some energy, visible energy. पाई बॉन्ड्स ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे. इसीलिए मैंने क्या बोला, polyacetylene is also expected to be colored. I am not sure whether it is colored or not, but I definitely believe, strongly believe it is colored. Or if you require electrical potential to move, I do not know. इतना strong नहीं होना चाहिए, oscillate हो जाएंगे. Visible energy उसको. So if visible energy is moving, what is the फायदा? You don't even require any potential difference. You can use them in photovoltaic cells. Photo, लाइट गिर गए, इलेक्ट्रॉन रवाना हो गए. हाँ? I don't know. They were discovered long ago, but recognized only in 2000. Nobel Prize 2000 में मिल गया. हो सकता है कुछ 1970 में ही polyacetylene बन गया. When I was a student, I asked my chemistry teacher, "Sir, why don't acetylene polymerize करके?" उन्होंने बोला acetylene polymerase है बेटा, but that is not yet accepted. Laboratory में है अभी, not under full industrial production. That was in 1981. Now, case 9 है, 10. A precious stones are colored. Sorry, ruby, sapphire, emerald, cat's eye, topaz. Diamond is not a precious stone. It's not a gem. Gems. Red, blue, green. Now, precious stones are made up of Al2O3. Alumina. Why is alumina colored? Listen. अलुमिना का कलर का डी ट्रांजिशन है क्या? डी किसके पास है? चार्ज ट्रांसफर है क्या?
कहां से कहां होगा? पोलराइजेशन, मतलब ऑक्साइड आयन से नेगेटिव चार्ज एल्यूमिनियम में वापस आएगा, ऑक्सीजन छोड़ना लेगा, एल्यूमिनियम छोड़ना लेगा। ऑक्सीजन होल्ड्स द इलेक्ट्रॉन्स मुट्ठी में, एंड आई टोल्ड यू एल्यूमिनियम ऑक्साइड इवन मेल्ट्स एट 2000 डिग्रीज। पहले मेल्ट होना है, बाद में आयन बनना है, बाद में पोलराइजेशन होना है। ये इतने आसानी से विजिबल लाइट से बिल्कुल नहीं होगा। सो व्हाई आर दे कलर्ड? कलर इज ड्यू टू इम्प्यूरिटीज, कलर इज ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। रेड के लिए कोबाल्ट इम्प्यूरिटीज, ब्लू के लिए कॉपर, द 3 C's, क्रोमियम। कोई इम्प्यूरिटीज में डी ट्रांजिशन होगा, लेकिन स्प्लिटिंग कौन करेगा? स्प्लिटिंग यहां का ऑक्साइड आयन और डी स्प्लिटिंग करेगा, डी ऑर्बिटल स्प्लिटिंग। सॉरी, या स्प्लिटिंग तक। केस 11 F2 Cl2 Br2I2। फ्लोरीन का कलर क्या है? F2, पेल येलो है क्या? पेल येलो, एक ग्रीनिश येलो, ये रेडिश ब्राउन, एक ग्रेइश वायलेट, मुझे ग्रे लगता है, किसी को वायलेट लगता है। नाउ why are they colored? Who excites easily? Very loosely held lone pairs, too many, बहुत सारे हैं ना, too many very loosely held lone pairs in too little space। बहुत कम जगह में बहुत सारे लोन पेयर है, therefore they get excited easily। यहां आयोडीन में इतना आसानी से नहीं हो रहा, ज्यादा एनर्जी ले रहे हैं ना। जेडी ली में एक तमाशा स्टेटमेंट दिया है, फ्लोरीन इज येलो बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स वायलेट कलर एंड एमिट्स येलो। क्यों एमिट करेगा? नहीं दिया, पुराना। Too many very loosely held lone pairs in too little space get excited easily, that is by taking visible energy। चलो, turn your notebooks horizontal। 12th point तक I am adding color to substances। 13th point में वो color remove करूँ, bleaching। Now NO, NO2, ClO2 लिखो। नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5,
ये सिंगल इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? Single electron also participates in bonding. 5 electrons shared by 2 atoms. So bond order 5 by 2, 2.5. Nitrogen oxygen bond order in nitric oxide is 2.5. Now, this is called odd electron bond is present. Odd electron bond means bond in which odd number of electrons participate. Bond in which odd number of electrons participate. Paramagnetic. Why? 7 plus 8, 15 odd number of electrons. Colorless. Colorless because unpaired electron is in bonding. Lone pair drives unpaired electron to bonding. मैंने बोला ना, यहाँ लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन को भागा देगा जाओ करके. ये चेस खेल रहे, ये क्रिकेट खेल रहे, ये खाली बैठा है, खाली बच्चा को क्रिकेट में भेज देते. NO अगर NO प्लस बनेगा तो NO अगर यह इलेक्ट्रॉन चला गया, जगह मिलेगा, लोन पेयर इधर आएगा. NO प्लस बन गया तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस. NO अगर NO माइनस बन गया तो हाँ, वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनता है. NO माइनस में 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. अभी ये 10th क्लास बच्चा को दूसरा 10th क्लास बच्चा कंपनी मिल गया, NO माइनस, सो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस. NO 2.5, NO minus 2. That NO is given in 3 consecutive years. 2006. CH3, CH double bond, CH2, NOCl. क्या होएगा? NOCl ionizes to give NO plus and Cl minus. Why? Though nitrogen is more electronegative, it allows chlorine to run away with the electron because bond order increases खुद का. And NO plus कहा जाएगा? Marconi. Alkyl groups drive pi bonds away from them. उधर push करेंगे. So negative part goes here, positive goes. This is 2006. 2007. Which of the following bond order is not equal to CO? इनमें से किसमें? NO, NO plus, NO minus, Cn minus, N2, CO. CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 है ना? CO में बॉन्ड ऑर्डर 3, Cn माइनस में 3, NO प्लस में 3, N2 में 3, लेकिन NO माइनस में 2. 2008 FeH2O 5 times NOSO4 is brown in color, is paramagnetic with 3 unpaired electrons, something given. पैरामैग्नेटिक पता करने के लिए NO का ऑक्सीजन स्टेट चाहिए ना. SO4 is -2, 5 पानी 5 0, NO is +1, आयरन +1. आयरन 3d6 4s2. आयरन प्लस का क्या होगा? आयरन प्लस का 3d6 4s1.
अभी NO है तो क्या करेगा, 3D6 में क्या रहेगा, D1 D2 D3 D4 D5 D6, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। लेकिन NO आके क्या करेगा, ये S1 को अंदर भगा देगा, एक ही ऑर्बिटल खाली करा देगा। याद रखना, एक ही स्ट्रॉन्ग लिगेंड एक ही ऑर्बिटल को खाली कराता है। खुद के लिए सीट मिल गया तो काफी है, दूसरे के लिए नहीं सोचता। NO इसको अंदर भगाया, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गया 0 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 लाइक दैट। 3 years सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। ओके, लेट अस टेक ए ब्रेक, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। बहुत भूख लग